Okay, now class 8, last set of factorization in question number 5. That is, the technique we are going to use here for factorization is given name as splitting the middle term, or also we call it as sum and product method. These are the two names given because that's the technique we use. This is your middle term. See, p square, 6p and 8, constant, power 1 and power 2. So if we have to factorize these kind of expressions, which are called as quadratic expression. Okay, so in this what we do is we split this middle term, बीच का term हम break करते हैं into two parts so that we can group it. अब ये splitting कैसे होती है? For that we also call it as I said, sum and product. So what are we going to say is this middle term is called as the sum, and first and the last put together, that is why we are calling it as product. हम इनको multiply कर ले रहे हैं 8p square. Okay, so we have to find factors such that they add up to give you 6p and they multiply to give you 8p square. Okay, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो product आता है इसके factors निकालते हैं. We will find factors of 8p square, this into this. Okay, and वो वाले factors pick up करेंगे जो sum देंगे हमें as 6p. Right, so like factors of 8 are 2 into 2. I have written the prime factors. आप चाहो तो इसको 1 by 1 भी कर सकते हो, 1 into 8, 2 into 4, that way. Okay, so here I've written all prime factors so that from here only I can pick up various combinations of the factors. So what I saw is that if I put 2 and 2 together, 4, then one leftover factor would be 2. So 4 2s are 8, and if I add these then I'm getting 6. तो मेरा product आना था 8 and sum आना था 6. So I have achieved that with this combination. So what are we going to do is we are going to split this middle terms as 4 plus 2. Okay, so that has been done here. So rest will be copied. P square and 8 copied as it is. 6p we will split as 4p plus 2p. अब इसका हमें advantage क्या होता है? Now we can group the terms and take common. This technique we have already done earlier. Okay, so from the first two we are getting p common, so 1p gone, a p remains, p gone, 4 remains. From 2p and 8 2 is coming common. ये सब हम पहले कर चुके हैं. So if 2 goes, p remains, and यहाँ से 2 गया है तो 4 2s are 4, 8, 4 remains. Now again we have got p plus 4 here, p plus 4 here. Same factor आप common ले लेते हो, p plus 4. So यहाँ बचा p, यहाँ 2. These are your two factors. Okay, so this is very important children. You have to learn this because ये आपका 9th 10th सब हमेशा काम आने वाला है आगे. Okay, so actually factorization in itself, the whole topic is very important. All the identities you should know thoroughly for higher classes as well. ओके, ऑलराइट. अब यही ट्रिक अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें मिला है इसमें भी ट्राई करते हैं. क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21. सो वी विल से आवर सम इज द मिडिल टर्म, दैट इज माइनस 10q. प्रोडक्ट इज फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म मल्टीप्लाइड टुगेदर 21q स्क्वायर. सो वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 21. वो क्यू स्क्वायर ऑटोमेटिकली जाता है, क्यू प्लस क्यू क्यू ही देगा आपको, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बन जाता है. सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द वेरिएबल्स, जस्ट ऑन द नंबर्स, क्योंकि वो तो आने ही है वेरिएबल्स. ओके, सो फैक्टर्स ऑफ 21, 2 गेट 10. सो 21 के 1 इंटू 21 होगा. नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा नहीं, सो 3 इंटू 7 प्राइम नंबर्स हैं. सो दीज आर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स. नाउ वी जस्ट नीड टू चेक वेदर दे आर गिविंग यू 10 और नॉट. ओके, सो 7 प्लस 3 गिव्स यू 10. Okay, क्योंकि नेगेटिव था तो हम दोनों को नेगेटिव ले ले रहे हैं, सो दैट द आंसर इज ऑल्सो नेगेटिव. सो वी विल स्प्लिट आर 10 minus 10 as minus 3 and minus 7. Q square copied as it is. This will split as minus 3 minus 7q. 21 copied as it is. Now if you group from the first two, you're getting q common and q plus minus 3 remains. इन दोनों से माइनस 7 कॉमन आ रहा है क्योंकि q पॉजिटिव होना था तो ये नेगेटिव साइन भी आप हटाओगे. ओके, तो माइनस 7 गॉन, q रिमेन्स, एंड माइनस गया है तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. माइनस माइनस गिव्स यू प्लस, एंड 7 3s are 21. सो ये फैक्टर फिर सेम आ गया तो आप उसे कॉमन ले सकते हो. यहाँ से q एंड यहाँ से माइनस 7 बच रहा है. दीज आर योर टू फैक्टर्स. नाउ फॉर द लास्ट पार्ट we have p square plus 6p minus 16. So again our sum or the middle term is 6p. Product is p into minus 16 p square. तो हम minus 16 के factors निकालेंगे, rather minus 16 के factors निकालेंगे to get plus 6. So I have written all possible factors of 16. 1 16s are,
2 8 एंड 4 4 दीज आर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब इनमें से मुझे ढूंढना है जो मुझे 6 दे दे। ओके, व्हेन आई से सम देन इट कैन ऑल्सो बी डिफरेंस, बिकॉज अगर साइंस ऑपोजिट होंगे तो आपको ऑपोजिट साइंस में इंटीजर्स में डिफरेंस ही होता है, राइट। सो आई हैव चेक्ड ऑल द कॉम्बिनेशंस, एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करके। फर्स्ट पेयर मैंने लिखा था 2 and 8, सो 2 + 8 गिव्स यू 10, 8 - 2 गिव्स यू 6। लाइकवाइज नेक्स्ट का एडिशन आ रहा है 8, सब्ट्रैक्शन आएगा 0, इसका एडिशन 17 15। तो नाउ वी विल सी हमें कितना चाहिए था 6, वो कहाँ मिला है हमें, तो कौन से फैक्टर्स ने दिया हमें 6, 2 and 8 इज द राइट कॉम्बिनेशन। ओके, एंड अभी ये हमें डिफरेंस करना है तो ऑपोजिट साइंस रखने होंगे, एंड ऑपोजिट साइंस होंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव भी होगा, राइट। सो वी विल स्प्लिट दिस एज p²। अभी मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए तो द बिगर फैक्टर वुड बी पॉजिटिव, द स्मॉलर फैक्टर विल बी नेगेटिव। सो वी कैन राइट 6 एज 8 - 2, तो हम इसको से स्प्लिट कर लेंगे। Okay, rest will be copied as it is. From here we'll take p common, so p + 8, 1 p gone, 1 p gone, p + 8 remains। यहाँ से -2, दोनों में नेगेटिव था, नेगेटिव भी कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ p बचा एंड ये पॉजिटिव, 8 2 16। ये फैक्टर फिर सेम आ गया जो आना चाहिए, तभी आपका फर्दर वर्क हो पाता है। सो दैट फैक्टर विल बी टेकन कॉमन, सो यहाँ p बचा था, यहाँ -2 बचा था, दिस इज योर आंसर।